Hello everyone. So our next topic is topic 3.12, that is cells in series and parallel. So as we are doing it in a रजिस्टर में हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसी तरह से हम सेल्स में भी बना सकते हैं. What we discussed in our previous lecture was किसी भी सेल है उसके दो स्पेसिफिकेशन होते हैं, एक होता है उसका ईएमएफ और दूसरा होता है उसका इंटरनल रेजिस्टर. सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. नाउ फर्स्ट करते हैं हम, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सो वी हैव टू सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज. सेल नंबर 1 है, उसका स्पेसिफिकेशन है, ये है एप्सिलॉन 1, उसका ईएमएफ, and then after its internal resistance is R1. Over here another cell is there whose EMF is epsilon 2 and its internal resistance is R2, right? If I wish to replace these both cells with a single cell, उसे बोलते हैं equivalent cell, right? तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो भी मैंने यहाँ पे दिखाई, ये दोनों सेम ही है, right? And I want to find out the value of epsilon equivalent, right? तो एक ही सेल से आपको दिखाना है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? सो ए और सी के बीच में हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट विथ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी. वी ए बी पहले फाइंड आउट कर रहे हैं. सो वी ए बी कैन बी गिवन एज वी ए माइनस वी बी एंड इट इज अ सिंगल सेल. ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही सेल है. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस के इट्स potential difference is epsilon 1 minus IR1, right? Epsilon 1 minus IR1, right? Then I can write for VBC. तो B और C के बीच में cell number 2 है, and for that I can write VB minus VC, which can be given as epsilon 2 minus of IR2, right? Then after we have a cell, okay, जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, VAC, राइट? सो VAC कैन बी गिवन एज VA minus VC, राइट? सो इफ आई विल ऐड एंड सब्सट्रैक्ट VB इन दिस, तो क्या होगा? तो क्या VA minus VB plus VB minus VC, राइट? यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों वैसे कैंसिल हो जाएंगे. सो आई हैव एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड द VB, राइट? सो व्हाट इज दिस? VA minus VB क्या होता है, राइट? सो इट इज epsilon 1 minus IR1, राइट? ओके, प्लस VB minus VC क्या है? सो इट इज epsilon 2 minus IR2, राइट? ओके, नाउ I am just rearranging it, so it is epsilon 1 plus epsilon 2, epsilon 1 plus epsilon 2 minus I मैंने कॉमन निकाल लिया, so minus of R1 plus R2, right? ये क्या है? That is VAC of combination of these two cells. Now if I wish to write down equation for this single cell, then what it should be? So it is VAC can be given as epsilon equivalent minus I into R equivalent, right? If I will compare these two, अगर मैं ये दोनों को compare करूं, then what I can derive? I can say that epsilon equivalent is equals to epsilon 1 plus epsilon 2, right? And यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे भी माइनस आई है. R equivalent can be given as R1 plus R2, right? तो ये हो गया किसी भी दो बैटरी के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला. नाउ व्हाट हैपेंस if the batteries were connected with some different polarity? जैसे कि यहाँ पे मैं एक चेंज कर देता हूँ, मान लो कि ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता तो क्या करते हैं हम, राइट? सो इन दिस केस द पोलैरिटीज विल चेंज. यहाँ पे ये माइनस E2 आ जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे epsilon 1 minus epsilon 2 हो जाएगा, राइट? सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट द पोलैरिटीज. इसके सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में दो ही पॉइंट्स है. एक पॉइंट ये है कि
you add all the EMFs, individual EMFs का आप एडिशन कर दो, algebraic एडिशन कर दो, and you will get its equivalent. n number of cells are there, तो आपको सभी cells के individual EMF का sum ही करना होता है, right? Second point is you add, if you have n number of cells, then you add the resistance, internal resistance of each and every individual cell, and you will get the R equivalent of it, right?